here are so many students today who want to learn Bhagavad Gita. Second thing मैं सबसे पूछना चाहूँगा, आप में से मुझे मैसेज कर सकते हैं आप कौन सी लैंग्वेज में चाहते हैं. यू वांट इन इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश? व्हाट लैंग्वेज यू वांट मी टू स्पीक इन? गर्वित है सर. हिंदी 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 हिंदी. ओके. English. Okay. So many of you have given both Hindi and English. So we'll mix both of them. Okay. Thank you so much. Some of them you are saying कि आपके कुछ friends हैं जो join नहीं कर पा रहे हैं. So no problem. आप उनको link भेज दीजिए. I am sharing the link. Just a minute. With you all. So with this link, they will be able to join the session. Okay. So now, just for your information, जो नए students आए हैं, for past 8 days we had some other sessions also. The name of the sessions were like exploring the new dimension or basics of Bhagavad Gita. And काफी students ने इसको attend किया and उसमें से भी कुछ students यहाँ पर मौजूद हैं. लेकिन हम लोग बेसिक से ही शुरू करेंगे फिर से भगवत गीता को. So this will be core Bhagavad Gita thing which you learn over here, and we'll try to complete this time in 21 days. In fact, COVID से मैं try कर रहा हूँ काफी बार, and because Bhagavad Gita is so interesting that I'm not able to finish Bhagavad Gita even a single time till now. For your information, right? So almost I have taken Bhagavad Gita sessions in COVID almost 5 to 6 times, and हर बार 3-4 महीने में वो चलता रहा है. Like this time I am thinking that I shall finish it within 21 days, and you shall also, है ना. आप सभी लोग भी प्रार्थना करिए, साथ में आपका अगर सहयोग रहा तो हम इसको 21 days में इस बार फिनिश करेंगे. So let us start. मैं आप लोगों के सामने जो है पीपीटी शेयर कर देता हूँ. I'll share the PPT. Right. Okay. So if you have any questions, I'll take those questions in the last. Okay. So anyway, so let us start now. So today we are going to just introduce you with Bhagavad Gita. कि Bhagavad Gita में what all things we are going to discuss. क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. तो आज का जो सेशन है आपको एक तरीके से it will make you aware कि क्या रहेगा आगे आने वाले सेशंस में पूरा. ओवरऑल भगवद गीता में एक्चुअल में है क्या. It is not some kind of a mystery. Yes, of course, Shivam has told it's kind of a foundation. आज का जो सेशन है वो फाउंडेशन जैसा रहेगा. So it is introduction to Bhagavad Gita. So I pay my respects, my dandavats to my spiritual master, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who is the founder Acharya for worldwide Hare Krishna movement. उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे. In fact, जिन लोगों ने पहले वाले सेशंस अटेंड किए उनको सबको पता होगा स्वामी प्रभुपाद के बारे में. So we'll start with the prayers, क्योंकि कोई भी चीज करने से पहले हमें भगवान को प्रे करना जरूरी रहता है. So let's start with the prayers. So wherever you are sitting, जहाँ पर भी आप बैठे हैं दोनों हाथ जोड़ के please chant these prayers with me. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Right. So what we are going to discuss in this course of Bhagavad Gita, it will not be a kind of lecture. In fact, it will be a very interactive session. So we'll be seeing some videos, कुछ activities. इस तरीके से अलग अलग चीजों के माध्यम से हम आपको थोड़ा engage करेंगे. So just it's not a pravachan, okay? I request you all to participate in the discussions in the whole this thing very nicely, and our target is that you try to implement this Bhagavad Gita in your day-to-day life. It should not be kind of just theoretical knowledge, okay? So that is my target. Learn the practical execution of the instructions, and you shall develop, आपको एक interest develop होना है in reading Bhagavad Gita. So that is whole target of this Bhagavad Gita course. Okay. So we had seen some years before that there was an IIT topper who was just 14-year-old, है ना, 2010 में. उसका जो नाम था वो था सहल कौशिक. 14 साल का बालक है, छोटा सा. जनरली स्टूडेंट्स होते हैं इस उम्र में जो है ना 16 years, almost 17 years, and then they fight for the IIT. और but यहाँ पर सहल he was a 14-year-old guy, and he not only cracked IIT but he top IIT. So after that he joined IIT Kanpur, and he was among the basically toppers, and then after that he went for 5 years course in foreign university, Stony Brook University in New York, or PhD. So actually why I am telling you this example, मैं क्यों ये आपको example बता रहा हूँ. We see कुछ जो है बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट लाइक नासा. वी सी. सो वो लोग भी क्या करते हैं, बेसिकली ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है, लेकिन उन सबका टारगेट क्या है, उन सबका टारगेट क्या है. वी सी सिमिलर काइंड ऑफ है ना people in here big marvels of scientists, scientific research, just like we see this kind of machines. आपको किसी को पता है क्या है मशीन? You can type in your chat box what is this machine. Anybody knows? जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा 9th class 10th class, you must be aware about it. Yes, I want two-way communication. आप लोगों की तरफ से भी कम्युनिकेट होना चाहिए, तो आप लोग भी मुझे मैसेज में रिप्लाई करते हैं. आई रिक्वेस्ट सो दैट इट कैन बिकम इंटरेक्टिव सेशन, एंड बी वेरी वेरी अटेंटिव. बहुत अटेंटिव रहिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सेशन में, आप इन्वॉल्व रहेंगे. इट शुड नॉट बी कि बस चालू करके छोड़ दिया. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. ओके, आई हैव रिसीव्ड सम आंसर्स बट नॉट मेनी आंसर्स. यस, ओके. पता नहीं है प्रभु, नो. ओके, सो लेट मी टेल यू, दिस इज बेसिकली पार्टिकल एक्सीलरेटर. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन को इतना स्पीड पे घुमाया जाता है और फिर अचानक से किसी चीज पे इसको बॉम्बार्ड करा जाता है जिससे कि वो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज हो सके वो चीजें. सो दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, जैसे बिग बैंग थ्योरी है या और भी इस तरीके की थ्योरीज हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज है ना लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, LHC, राइट. तो इस LHC से वो एक्सीलरेट कराते हैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे कर करके ऑर्बिटर में, और बहुत हाई स्पीड जब उसकी हो जाती है अचानक से वो किसी चीज पे इस पे स्ट्राइक करवाते हैं. इट मे बी सम न्यूक्लियर पार्टिकल और सम अदर थिंग्स लाइक दैट. फिर अगेन मेरा प्रश्न यही उठता है आपसे, मैंने जो पहला का एग्जांपल ये दिखाया, इससे क्या आप सेंस कर सकते हैं? What you can make sense with this?
Revati Raman Panda, he has written, in a mechanical process by which we can reduce the work of human called machine. Okay, very good. Yes, anything else? So what do you, just a minute, sorry. No, sorry. So what do you understand by these two examples till now? एक क्या common चीज है? Finding young talent. Okay. Okay. Next example, we see architecture projects which defies even the gravity also. है ना, इस तरीके के लोगों ने मॉडल्स बनाए, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाए जहां पर ग्रेविटी काम नहीं करती है. You can fly in the air, in fact. And after that we see people are going outside and in the space, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, वो अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. We see such kind of people. And like that we see invented countless ways, हवा में, जमीन के अंदर, पानी के अंदर, और इस तरीके के ब्रिजेस बने हुए जिसको देख के आप दांतों तले उंगली दबा देंगे, राइट. इस तरह की बहुत सारी चीजें हम हमारे चारों तरफ देखते हैं. और फिर आर्टिफिशियल बीच, एक तो नेचुरल बीच होता है, लोगों ने आर्टिफिशियल बीच बना रखे हैं जहां पर जाके वो, है ना, समुद्र के जैसा फीलिंग लेते हैं, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली समुद्र के जैसी फीलिंग आती है. So my question to all of you is, what is the driving fuel for them? क्यों वो जो है इस तरीके से इन चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं? What is the driving fuel for them? You can type in a chat box कि इन सब से वो करना क्या चाहते हैं. Okay, Akanksha has replied, energy. There are so many hidden things, possibilities can arise. We just have to try. गर्वित ने लिखा है, very good. Okay, aliens को find out करना चाहते हैं, Shivam is telling. Okay, वो भगवान बनना चाहते हैं. नयन ने लिखा है, साइंटिस्ट लीडिंग टू डेवलपमेंट, साइंस लीडिंग टू डेवलपमेंट. ओके, वेरी गुड. और कुछ? टू मेक देमसेल्व्स बिजी, और ने लिखा है, मे बी एवरीवन सर्चिंग फॉर द लास्ट थिंग टू फाइंड. ओके, ड्राइविंग फ्यूल एग्जैक्टली क्या है? एग्जैक्टली. ओके, सो लेट मी टेल यू. युधिष्ठिर ने लिखा है, कंट्रोल द वर्ड, दिग्विजय प्लेजर. Okay, very nice. So आप लोग ऑलमोस्ट आंसर्स करेक्ट है. लेट अस सी कि व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर which I want from you all. So अभी आप खुद से ट्राई करना, फाइंड आउट करने का आंसर में क्यों ये चीज आपको बताया. अभी जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूँ उससे आप आंसर ढूंढने की कोशिश करना. आप सब ने लिखा है, ब्रेन इज ड्राइविंग फ्यूल, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओनली 0.0001% यूनिवर्स is discovered. Okay, so हम में से कुछ स्टूडेंट्स फिजिक्स के स्टूडेंट्स रहे होंगे और आपने नील्स बोर के बारे में सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सुना होगा. तो नील्स बोर लिखते हैं, इट इज रॉन्ग टू थिंक दैट फिजिक्स हैज टू फाइंड आउट व्हाट नेचर इज अबाउट. यह सोचना गलत है कि फिजिक्स जो है वो किसके बारे में है, कि नेचर एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में. फिजिक्स इज ओनली ऑक्यूपाइड व्हाट कैन वी से अबाउट नेचर. ठीक है, तो फिजिक्स जो है वो आपको एग्जैक्टली नेचर के बारे में नहीं बता सकती, बट वो इतना बता रही है कि नेचर को वो जो ऑब्जर्व कर सकती है, ऑब्जर्वेबल थिंग्स, उसके बारे में फिजिक्स कह सकती है. ये सोचना बिल्कुल गलत है. वो नेचर के बारे में संपूर्ण चीजें बता देगी. एवरीथिंग इट कैन नॉट टेल राइट नाउ. व्हाट इट कैन ऑब्जर्व, दैट इट कैन टेल यू. Okay, this is the statement by physics. But in reality, physics का target क्या है? It's basically to understand the reality. It's basically for understanding the reality. Physics जो है वो enjoyment का साधन नहीं है. उसका मेन जो टारगेट था, साइंस का जो मेन टारगेट था, वो साइंस का मेन टारगेट क्या है? अंडरस्टैंड द रियलिटी, टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ. एंड इनफैक्ट जो बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं वो उसके पीछे भाग रहे थे. Albert Einstein, he says, physics is an attempt to understand the reality, regardless of whether this is observed or not. In fact, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है कि ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं फिजिक्स के माध्यम से हम लोग कि रियलिटी क्या है. जो मैंने देखा नहीं देखा वो मैटर नहीं करता है, मुझे तो रियलिटी समझना है.
एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड रियल ब्रेन, रियल इंटेलिजेंस। आजकल में क्या हो गया, केवल केवल लोग जो है केवल सेंस एंजॉयमेंट के पीछे भाग रहे हैं, दे आर रनिंग आफ्टर सेंस एंजॉयमेंट, बट रियल नॉलेज के पीछे नहीं भाग रहे हैं। जब आदमी रियल नॉलेज के पीछे भागता है तो एक अलग ही पर्सनालिटी बन जाता है, राइट? सो एक्चुअल में वो रियलिटी जो है, जैसे हम लोगों ने पहले के सेशंस में समझा था कि somewhere there is a creator, we can't deny the existence of a creator. In fact, big scientists, they are also telling that this world doesn't exist without creator. Werner Heisenberg, these were three people: Niels Bohr, Werner Heisenberg, and one was, I'm forgetting name. They were the three scientists who are you can say कि जिन्होंने क्वांटम जो क्वांटम फिजिक्स है उसको जन्म दिया। तो he tells, Heisenberg tells, the first gulp from the glass of natural sciences will turn you into an atheist, but at the bottom of the glass God is waiting for you. ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं होते हैं। जब आप साइंस स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करोगे, you will become नास्तिक। बट जैसे जैसे आप और डीप में जाओगे, गहराई में उतरोगे, science will force you to believe in the existence of God. Science will actually force you to believe into the existence of God. Such a big scientists are telling like that. Albert Einstein's one more quote: I want to know the thoughts of God. I want to know how God created this world. I'm not interested in this phenomena or that phenomena, in spectrum of this or that element. I want to know his thoughts, rest are details. Actually, आप सोचिए कोई बहुत बड़ा आदमी है, उस बड़े आदमी के क्लोज आने का तरीका क्या है, उस आदमी को समझो आप, उसकी लाइक्स क्या हैं, उसके डिसलाइक्स क्या हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ काइंड ऑफ पर्सन हु वांटेड टू अंडरस्टैंड कि भगवान जो है, जिन्होंने संसार को बनाया, या क्रिएटर कह लो या व्हाटएवर यू कॉल हिम, उनके थॉट्स क्या हैं। एक बार उनके थॉट्स पता लगे तो ये सारा संसार में उनको वैसे समझ में आ जाएगा। If I understand his thoughts, I'll understand each and everything with that thought, why he has designed this creation, what is the purpose of this creation, how he designed this creation, that all I'll understand. Those are details, but his thoughts I should understand first, right? एक्चुअल में हम किसी आदमी को लाइक और डिसलाइक कैसे करते हैं, उसके थॉट्स से लाइक और डिसलाइक करते हैं। सो बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, लेट्स से यू वांट टू अंडरस्टैंड सम बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को बनाने वाले को आप समझ जाओ कि इसके थॉट्स क्या रहे हैं इस बिल्डिंग को बनाने के पीछे, यू विल अंडरस्टैंड द होल बिल्डिंग आल्सो। सो he tells further, when I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. मैं जब भगवद गीता पढ़ता हूँ और फिर मैं इस संसार के बारे में सोचता हूँ कैसे भगवान ने संसार को बनाया होगा, मुझे सारी बाकी सब चीजें सुपरफ्लुअस मींस टाइनी लगती हैं, बेकार लगती हैं। I have made Bhagavad Gita as a source of my inspiration and guide for the purpose of scientific investigation and formation of my theories. Many great scientists, they have taken inspiration from Bhagavad Gita. That's what I wanted to tell you over here. So he tells we can't solve problems now here. Because it's an introduction to Bhagavad Gita, I tell you कि भगवद गीता कैसे हमारा पैराडाइम शिफ्ट करती है, कैसे हमारे अंदर चेंज लेके आती है। सो भगवद गीता हमारे जो थॉट लेवल है उसको एकदम से अप लेके जाती है। इट चेंजेस योर थॉट्स, इट चेंज योर पैटर्न ऑफ थिंकिंग। हाउ? अल्बर्ट आइंस्टाइन इज टेलिंग बेसिकली वी कांट सॉल्व प्रॉब्लम्स by using the same kind of thinking we used when we created them. आप मान लीजिए आज किसी समस्या में हो, you are having some problem, so now you want to solve that problem. तो हो सकता है वो प्रॉब्लम उस वक्त आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओ और बहुत बड़ी लग रही है आपको, राइट? यू थिंक एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, ऐसा कभी कोई ना कोई समय रहा होगा, उस वक्त वो समस्या आपको इतनी बड़ी लग रही हो, इट माइट हैव बीन लाइक काइंड ऑफ माउंट एवरेस्ट. You can't cross, you can't solve that problem, you might have felt like that, right? लेकिन आज जब आप समस्या के बारे में सोचोगे, you will feel like that, अरे ये प्रॉब्लम तो बहुत आसान थी मेरे लिए सॉल्व करने के लिए, right? So he's saying you can't solve the problem by using the same kind of thinking we use
when we created them. I hope you are able to understand my point. कितने लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आया? You can type in your chat box what I am saying. Okay, so now I thank you so much. So relatable. Now what does Bhagavad Gita do? You see, now I'll tell you. You think any problem in your life, just any big problem which might happen, like आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, उसको पास नहीं कर पाए, कोई कंपटीशन में, जस्ट टेक अ मिनट, आप ब्रेक, जस्ट थिंक आप उस वक्त कितना डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, कितना सैड फील कर रहे थे. यू वाज लाइक some of you might be having a no, it will be like that forever. Now my whole career has been ruined and I can't do anything. Just think that kind of problem, right? Okay, now you open your eyes or just tell me, क्या आपको ऐसा लगता है कि आज उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर सकते थे? क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई हो? इनफैक्ट वो प्रॉब्लम परसिस्ट ही नहीं कर रही होगी अभी आपके सामने, अभी दूसरे तरीके के चैलेंजेस आ गए होंगे. यस, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. यस, हाउ मेनी ऑफ यू से लाइक दैट? यस सर, राइट. सो नाउ why it has happened, I'll tell you after some time. ठीक है, इसको आप पॉइंट को नोट करके रखना, आपको आंसर खुद मिल जाएगा और आप खुद बताएंगे ऐसा क्यों हुआ. ओके, नाउ इन भगवत गीता मैं स्विच कर रहा हूँ, दूसरा टॉपिक लेके आ रहा हूँ, पर ये जो आंसर है आपको आगे मिल जाएगा और आप खुद मेरे को बताइएगा कि वो जो ये इस चीज का क्या आंसर है. ठीक है, भगवत गीता में जस्ट लाइक अल्बर्ट आइंस्टाइन ही सेज अबाउट मटेरियल एनर्जी, है ना, देयर इज अ एनर्जी E = mc², उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है. तो सारा का सारा जितना भी चीजें संसार में अकॉर्डिंग टू हिम इट इज एनर्जी, राइट. कंसर्निंग मैटर वी हैव बीन ऑल रॉन्ग. व्हाट वी हैव कॉल्ड मैटर इज रियली एनर्जी. वो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ मैटर है नहीं, पदार्थ है नहीं, केवल केवल ऊर्जा है, whose vibration has been lowered as to be perceivable to the senses. There is no matter, there is only light and sound. ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का स्टेटमेंट है. Now let us see what does भगवत गीता say about it. भगवत गीता का 7th चैप्टर के 4th वर्स में लिखा हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ऑल टुगेदर दिस कंस्टिट्यूट माय सेपरेटेड मटेरियल एनर्जी. ये 8 तरीके की मेरी सेपरेटेड एनर्जी है. अर्जुन, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को. ऑलरेडी भगवत गीता इज टेलिंग दिस थिंग, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, ओनली एनर्जी. लाइक दैट भगवत गीता इज सो प्रैक्टिकल. तो आपको वो एनर्जीज के बारे में बहुत डिटेल में देखने को मिलेगा, कैसे ये एनर्जी लाइफ क्रिएट करती है, कैसे एनर्जी हमको चला रही है, हमारी इस मशीनरी को चला रही है. जिन लोगों ने वो सेशन अटेंड किया होगा दैट रियल योगा, उसमें मैंने थोड़ा ग्लिम्स भी दिया था कि एनर्जी कैसे हमको कंट्रोल करती है. सो दैट विल सी इन डिटेल हाउ दिस एनर्जीज आर अफेक्टिंग योर थॉट्स. These energies are sometimes making you dull. कभी आपको डल कर देती है, कभी आपको बहुत एक्टिव बना देती है, कभी आपको बहुत लेजी बनाती है, कभी आपको बहुत लस्टी बनाती है, कभी आपको बहुत ईमानदार बना देती है, कभी आपको बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं बहुत ही, है ना, एक्टिव एक्टर एक्ट्रेसेस बना देती है. लाइक दैट these 8 energies are affecting so much. So we'll try to understand those things. भगवत गीता में वो चीजें बहुत अच्छे से दी गई है. Now what else we'll understand? These 8 energies are there, but कृष्णा बोल रहे हैं, जो हमारी साइंस भी कहीं कहीं बोलती है एंटी मैटर. आपने सुना होगा, there is a word they use, anti matter. 2 scientists were there who got Nobel Prize for that kind of you can say guess and that kind of theory, that there also exists some kind of anti matter which does not decay or change into different energy. It remains as it is according to them. तो जो मैटर के बिल्कुल अपोजिट चलता है, they have told. So Krishna is also telling that same thing in next shloka of the same chapter, 5th shloka, 5th verse. Beside this, oh mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mine. हमारे जो है
उसके अलावा जो ये 8 एनर्जी है, मिट्टी, हवा, अग्नि, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, भूमि, राप, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, एवचा। उसके अलावा क्या है? अप्रेयमितस्त्वन्या प्रकृति विधि में पराम जीव भूत महाबाहो ये दम धार्यते जगत। तो कृष्ण इज टेलिंग उसके अलावा भी देयर आर समथिंग व्हिच इज वेरी हाई, ओ अर्जुना, व्हिच इज है ना मैचिंग विद द साइंटिस्ट थ्योरी कॉल्ड एंटीमेट। सो बट प्रॉब्लम इज व्हाट, आई वाज टेलिंग यू, कैसे हमारे थॉट्स की वजह से हम डल फील करते हैं, लेजी फील करते हैं, लस्टी फील करते हैं, एंग्री फील करते हैं। तो दिस एनालॉजी आई हैड गिवन अर्लियर आल्सो, just like एक fish है, you take it out of the water and you provide everything to it. You give it whiskey to drink, you give it anything to eat, money, AC or non-AC or nice cool breeze or whatever you want, you give it. But whether it will become happy or not, you can type in your chat box. Can fish become satisfied, happy, content after getting all these things, but still it is outside the water? It cannot. It cannot. So actually Bhagavad Gita is doing, you know what? अभी हमारा जो कॉन्शियसनेस है, वो कैसा है? ये 8 एनर्जीज के जैसा काम कर रहा है, इसके जैसा काम कर रहा है, इनसे अफेक्ट हो रखा है। करना चाहिए इसके हिसाब से काम। तो हमें क्या है, ऐसी मछली के जैसे हैं। We are just like a fish who is thinking that I am the person of these 8 energies. I am the person made up of these 8 energies. 8 एनर्जी से बनी हुई फिश, मतलब हम सोच रहे हैं इसके जैसा, बट हम एक्चुअल में ये हैं। तो भगवत गीता क्या कर रही है ये आपकी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करती है। 8 एनर्जी से लेके उससे दूर लेके जाती है आपकी कॉन्शियसनेस को, और दूसरी कॉन्शियसनेस में लेके चली जाती है। आपने जस्ट सॉरी, एक्सक्यूज मी। सो तो भगवत गीता क्या कर रही है, आपको वापस से रियलाइज करवा रही है, व्हेन यू कैन बिकम हैप्पी, व्हेन यू कैन बिकम सैटिस्फाइड। सो ये एक तरीके से केवल एक झूठा एश्योरेंस नहीं दे रही है भगवत गीता। So many people throughout the world, they have read Bhagavad Gita and they have found solace. Whosoever, anyone, I'll tell you now a beautiful story. It's a real happening, So it happened so that there was a billionaire and he wanted to try a kind of experiment. So इसने बोला कि I put a challenge in front of everyone. मैं उसको 20 साल तक जो है एक कमरे में रखूंगा। I'll keep that person inside the room for 20 years. Only food will go. उसके रहने की सारी व्यवस्था रहेगी अंदर, a nice AC, bathroom and everything. It will be there inside. But nobody will go inside that room to meet him, to talk to him. No newspaper, no, even nothing will be there. Even he can't ask for the dictionary also. No communication. And if he lives inside that room for 20 years like that, and he should not demand that I will come out. As soon as he'll come out, I'll cancel the deal. But if he is able to live like that inside that room for 20 years, we'll make that agreement in return. Then he will get from me $1 million or $10 million, something like that, he told. So nobody actually dared. Who will actually do like that? 20 साल अपने जीवन के उसने निकाल दिए. So anyway, he asked that person, you don't give me anything, and in fact I think newspaper were allowed, I think so. So newspaper were allowed, but no person could communicate with that person. It was like that. No mobiles, no person inside the room. Only few magazines were allowed. So magazines were already there. No news and no any new magazine was not going, something like that. So 1 year passed and somehow that he tolerated.
he was like almost 1, 2, 3, 4 months, 5 months, 6 months, 8 months, like that. So no problem, like that it happened. Then 6 months passed, 1 year passed, and sometime people who are outside वो observe कर रहे हैं चीजों को, and they are giving the reports to this billionaire. So they told that sometimes he's crying, sometimes he's laughing, and sometimes he's shouting like anything, because he wants to talk to someone, but he's not getting irritated kind of thing. So then after 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, and he's becoming kind of crazy. He's smashing his head against the wall, against the door, but he's not coming out because he's having greed of that money, है ना, $10 million. फिर उसके बाद में जो है 10 साल निकल गए. He was almost kind of crazy fellow that time. 15 years, 16 years, 17 years, 18 years, only 2 years are remaining, 19 years. And then this billionaire was okay, oh, this person has made it. It seems only 1 year is remaining. And in the last, he got Bhagavad Gita. He got Bhagavad Gita. And after reading Bhagavad Gita, वो जो चिल्ला रहा था, जो रो रहा था, वो everything got stopped. And he was actually just reading. He found so much solace, so much peace, so much satisfaction. Santushtah satatam yogi yatatma dhananashya. He became very happy. Then 6 months passed, 8 months passed, 9 months passed, 10 months passed. 11 महीने, केवल 1 महीने बचा है. Yes, only 1 month. 19 साल और 11 महीने. He successfully lived inside that room. Anybody can guess what happened in last month? Anybody? What could have happened with that person? नकुल ने आंसर लिखा है. ओके, धनंजय ने लिखा है, राहुल ने लिखा है, शिवम ने लिखा है. ओके, actually, yes, you all are correct. He actually came out of that room just 2 days before. Just 2 दिन पहले वो उस रूम से बाहर आ जाते हैं, because he was so satisfied. He found so much time, है ना, कोई इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा. And he was reading Bhagavad Gita very systematically, very focused, each and every verse, na, shloka after shloka, and completely, he was thorough with Bhagavad Gita. And he came out of that room. So now actually his consciousness got elevated. He did not, was not like this kind of a fish who is crazy after these things. Of course, I'm not saying that these are not necessary things, but these things generally make a person dissatisfied. Anyway, अब इस पे हम कभी दोबारा चर्चा करेंगे, ऐसा उसे करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था. But this is actually a real happening. Okay. So now, आपको आंसर मिला है नहीं मिला मुझे पता नहीं. जो मैंने पहले पूछा, अगर आपको मिला हो तो आप टाइप कर सकते हैं. जो मैंने पहले आपके सामने क्वेश्चन रखा था, मैंने आंसर दे दिया है. तो श्रीमद् भगवद गीता, actually, what does it tell basically? Again, I'm again telling that answer. It is transferring your thoughts from material things to spiritual things. Your material consciousness is becoming spiritual consciousness. Right now we are busy. Oh, I'll watch that new movie or not. When I'll get the HD version or 4K version of that movie. When I'll get that Netflix package. And I'm not very much, aware about these things. Okay, बहुत ज़्यादा पता नहीं आजकल की इन चीज़ों के बारे में, पर मैं बाकी स्टूडेंट से सुनता हूँ तो बता रहा हूँ. So they're crazy after Netflix package, some kind of what do they say? Some kind of codes जिससे उनको free वो मिल जाता है ना, package मिल जाता है, something like that, and the subscription, yes, subscription they get. So they are always thinking like that. But when you are into these kind of things, you are reading Bhagavad Gita and
chanting and all those kind of things. So you are totally different kind of a person. So your same advice is given by Krishna to Arjuna. Arjuna, you can see many times I hear from the boys, from the students that, okay, Prabhu, we are very busy, so that's why we are not getting time to read Bhagavad Gita. We want to read, but we are not getting time. Now you tell me, Arjun जो है वो कितना busy थे, was very busy. In fact, he is fighting. He has to shoot the arrows. और उस वक्त उन्होंने भगवद गीता सुनी. इसका मतलब भगवद गीता कब सुननी है? जब आप जीवन में सबसे ज्यादा बिजी हैं. You should not be like, मेरे को सबसे ज्यादा खाली समय मिलेगा तब मैं भगवद गीता पढ़ूंगा. नो, भगवद गीता तब पढ़नी है जब सबसे ज्यादा बिजी हैं. तो आपकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई लेवल की हो जाएगी. ओके, नाउ व्हाट एल्स विल डिस्कस इन दिस 21 डेज कोर्स. आपको समझ में आ गया होगा अभी तक. तो कॉन्शियसनेस चेंज होता है हमारा, राइट. फिर इसके अलावा वी अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कितने तरह की एनर्जी वो कैसे काम करती है यहाँ पर, राइट. और हमारी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. 5 चीजें और भगवद गीता में जो है, एक और जो सब्जेक्ट मैटर हम डिस्कस करेंगे भगवद गीता के अंदर. 5 टॉपिक्स आर गिवन, which what these 5 topics जो पूरा भगवद गीता के अंदर जगह जगह में देखने को मिलेगा. इनफैक्ट दिस होल क्रिएशन, होल ब्रह्मांड इन 5 चीजों में डिवाइड किया जा सकता है. ओके, दिस होल क्रिएशन, होल यूनिवर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 थिंग्स. फर्स्ट इज मटेरियल नेचर, प्रकृति. तो जैसा भी हम लोगों ने देखा, जो एनर्जी है, एनर्जी को भगवद गीता में क्या बोला जा रहा है? प्रकृति बोला जा रहा है. ओके, inferior energy and superior energy, inferior प्रकृति and superior प्रकृति. ओके, इसके बारे में डिटेल यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन वी डोंट हैव दैट मच टाइम. डिटेल्स हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे. देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट काल, समय. समय भी एक फैक्टर है जो आजकल थोड़ा सा साइंटिस्ट इसको मानने लगे हैं. आपकी जानकारी के लिए, पहले समय को थियोरेटिकल चीज माना जाता था, लेकिन आज समय को एक एंटिटी माना जाता है ना. अल्बर्ट आइंस्टाइन हैड प्रूव्ड दैट थिंग. पहले समय को एंटिटी नहीं माना जाता था, इट वाज जस्ट अ कॉन्सेप्ट. बट नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि जैसे अग्नि होती है वैसे समय भी होता है. अगर आप बहुत तेज स्पीड से चलोगे, यू विल एक्सपीरियंस कि आपकी घड़ी थोड़ा पीछे हो गई है, राइट. क्वार्ट्ज की जो घड़ियां होती है. सो इट्स अ बेसिकली यू नो अ फिजिकल थिंग व्हिच एग्जिस्ट इन योर लाइफ. तो भगवद गीता उसके बारे में बताती है डिटेल में. दैट विल आल्सो विल अंडरस्टैंड. कर्मा है ना, उसके बारे में आपने सुना होगा कि कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं. जो भी एक्टिविटी करते हैं उनके रिएक्शंस आते हैं, वो कैसे काम करते हैं, दैट यू विल अंडरस्टैंड. ईश्वरा हु हैज क्रिएटेड दिस होल क्रिएशन, उनके बारे में डिटेल्स हम समझेंगे. जीव मतलब हम, जीव और ईश्वर में अंतर होता है, दैट यू विल ट्राई टू है ना absorb. So these 5 things are given in whole Bhagavad Gita. Okay, then तो ऐसे ही जो भी जितने भी वैदिक लिटरेचर्स उनमें कुछ कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं. तो भगवद गीता में 5 टॉपिक्स दिए हुए हैं. श्रीमद् भागवतम में 10 टॉपिक्स दिए हुए हैं. ओके, नाउ इट इज टेलिंग वन मोर वंडरफुल थिंग. योग कर्मसु कौशलम. आपने लोगो देख रहे होंगे. वन लोगो इज ऑफ Indian Institute of Technology Jodhpur, Indian Institute of Technology IIT Jodhpur. One is MNIT, not sorry, is of IIT Kharagpur. So there you see some kind of shlokas are there. अब ये logos कब बने थे? ये लोगो बने थे some 50, 60, 70 year old. आजकल आप किसी कॉलेज का लोगो देखोगे, this kind of है ना shlokas you will not find. But here you can find these kind of shlokas. People were so much aware. कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, they were including this kind of shlokas because उनको importance पता थी इन चीजों की. तो IIT खड़गपुर का आप जो यहाँ पे लोग देख रहे हैं, उसको मैं जस्ट एक्सप्लेन करना चाह रहा था. योगा कर्मसु कौशलम होता क्या है? If you have got into some big institute, it means बस खत्म. Now I'll enjoy. खूब ड्रिंक करूंगा, खूब मैं जो है सट्टेबाजी करूंगा, और रात को लेट सोऊंगा, लेट उठूंगा. आई विल बी है ना
going here and there with the girls and will enjoy the life like anything. Now my work is done, I'll get some job here and there. Now I need not to worry. But that's what not this institute in reality wants to teach us. योग कर्मसु कौशलम, कैसे कर्म करना है, कैसे आपको काम करना, यू हैव बिकम एन इंजीनियर, बट कैसे काम करना वो भी सीखना है। भगवत गीता से वो हमें गाइडेंस मिलता है जो आजकल हमें नहीं दिया जा रहा है इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, वो लॉस्ट हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो वर्क जस्ट लाइक आज हमारे जो चैतन्य कुंज है वहां पर कुछ मजदूर आए, सो दे वर डूइंग सम गार्डनिंग वर्क एंड I was seeing them. मैंने बताया ऐसे नहीं, ऐसा करो तुम लोग। तो they were very happy कि स्वामी जी तो बहुत आसान हो गया काम और अच्छा भी हो रहा है। तो I told them कि अरे भाई you apply your बुद्धि, why are you just working with your body? भगवान ने बुद्धि दी, उस बुद्धि का इंटेलिजेंस का यूज क्यों नहीं करते हो? माइंड का इंटेलिजेंस का यूज करो। तो people, there are some people who work with the body and the senses, there are some people who work with mind and intelligence. तो जो इंटेलिजेंट क्लास ऑफ सोसाइटी है वो किससे काम करती है? जनरली माइंड और इंटेलिजेंस से। जो इंटेलिजेंट नहीं है वो बॉडी से ही काम करता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, बस खाने को मिल जाए और कुछ भी गधे के जैसा वो काम करता रहेगा। दिन में 500 रुपए 600 रुपए कमाता है वो। Whereas an intelligent person, he will earn 1 lakh rupees, 10 lakh rupees in a day also sometime. So where it is, ना, so Bhagavad Gita is teaching, जितना ज्यादा सटल जाओगे आप, जितना ज्यादा सूक्ष्म जाओगे आप अपने कर्म में, है ना, दैट इज एक्चुअली कौशलम। आप अपने कर्म को जितना ज्यादा सटल बना दोगे, जितना ज्यादा सूक्ष्म बना दोगे, दैट मच एक्चुअली इट विल बिकम मोर एंड मोर वैल्यूएबल। वो काम और ज्यादा कौशल मतलब कुशलता से कर रहे हो आप, उसको वंडरफुल तरीके से कर रहे हो। तो उस आर्ट को भगवद गीता हमको सिखा रही है, कैसे किसी काम को और ज्यादा सूक्ष्म बनाना है, कैसे किसी काम को और अच्छे से करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं काम को स्मार्ट करो, है ना, अच्छा करो, वंडरफुल वे में करो, लेकिन भगवद गीता से ज्यादा स्मार्ट वे कोई बता नहीं सकता हमको अपने कर्म को करने में। तो दैट विल अंडरस्टैंड दिस institutes logos are including this kind of shlokas, but unfortunately वहां पर कोई नहीं आज इस श्लोक का मीनिंग बताने के लिए। तो ये भगवत गीता के अंदर ये श्लोक दिए हुए हैं, योग कर्मसु कौशलम, ये किसी और स्क्रिप्चर से, तम ज्ञानमयो विज्ञानमयोस्मि, है ना। तो दिस आर सो वंडरफुल, राइट। सो भगवत गीता इज नॉट ऑल्सो सेकंड पिक्चर में जो आपको देखने को मिल रहा है, दिस समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस थिंग, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। Then Bhagavad Gita not only does this thing, it removes the fear from the life of the people, miseries and anxieties from the life of the people, life of the students. We see आजकल के जो स्टूडेंट्स बड़े ही टेंशन में, उदास, निराश और हारे हुए से रहते हैं। उनको सब मिल गया तो भी और नहीं मिला तो भी। तो भया शोकादि वर्जितः, श्लोक आप देख रहे होंगे। तो भय और शोक आदि से आपको फ्री करती है ये। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान, जो ये गीता शास्त्र को पढ़ता है, भय शोकादि वर्जितः, वो भय से मुक्त हो जाता है। ऑल द मिजरीज एंड एंग्जाइटीज ऑफ द लाइफ इट गेट्स गो। आप देखिए कितना वंडरफुल है ये लिटरेचर। सो लाइक दैट देयर आर सो मेनी अदर डिस्क्रिप्शंस गिवन बाय आदि शंकराचार्य अबाउट भगवद गीता। देन it teaches about the mind, how to control the mind. In fact हमारा जो फर्स्ट सेशन था NDOL का, तो उसमें भी हम लोगों ने इस चीज को देखा था कि माइंड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दैट आल्सो विल अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली। 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन विल अंडरस्टैंड कि कोई भी काम को सक्सेस होने के लिए कौन कौन से फैक्टर पे आपको फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ओवर द परफॉर्मर, you have to focus over the senses जिनसे आप काम कर रहे हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। फिर इसके अलावा आपका प्रयास, योर एक्शन, फिर द प्लेस ऑफ एक्शन जहां पे आप काम कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली द गॉड। ओके, इसको हम डिटेल में समझेंगे। 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। आप में से कुछ लोगों ने महसूस किया होगा, आई एम फीलिंग डल वेरी टुडे, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे, सडनली आफ्टर 1 hour यू आर फीलिंग वेरी लस्टी।
You have not done any kind of wrong activity. You have not done any illicit thing. You have not done. You have not watched any wrong video also. But suddenly you start feeling lusty. Suddenly you start feeling very happy. Suddenly you start feeling very angry. तो प्रकृति के 3 मोड होते हैं, 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण. आई डोंट नो कि कितने लोगों ने आपने इनका नाम सुना है, पर जिन लोगों ने भी सुना होगा दे मस्ट बी हैविंग है ना सम रियलाइजेशन की प्रकृति के 3 गुण कैसे काम करते हैं. Someday I am feeling very lazy, other day I am very active. तो ये 3 गुण हमें कठपुतली के जैसा, अगर आप पीछे की इमेज देख पा रहे हैं तो नीचे जो आदमी है वो डोरियों से बंधा हुआ है, कुछ धागों से बंधा हुआ है. तो 3 modes actually exist and they control every one of us. So भगवत गीता tells you कि 3 modes आप कैसे free हो सकते हो. No science will tell you actually these things. Okay, so this is a wonderful thing, right? And then Bhagavad Gita actually it removes all kind of addictions. You might be having in the last ENDUL session, one student asked, "I'm addicted to for the games, online games and all that. How can I avoid them?" So Bhagavad Gita जो है, जैसे हम लोगों ने सेशन में समझा था, it cleans every kind of addictions from you, every kind of addiction from you, right? So just experience that thing. In fact, जॉर्ज हैरिसन का आपने नाम सुना होगा, बीटल्स, नंबर 1 band of the world. So he actually started following Bhagavad Gita and preaching. And from whom? From a true teacher of Bhagavad Gita, Srila Prabhupada जी का फोटो आप देख पा रहे हो. And he became totally different person, right? And अल्फ्रेड फोर्ड कंपनी के जो मालिक, आप उनको देख सकते हैं किस तरीके से वो हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं. ही इज इन धोती कुर्ता, तिलक, एंड इज वर्शिपिंग द लॉर्ड, राइट, अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म. सो people's life got changed when they read Bhagavad Gita. And many foreigners, they accepted this culture after reading Bhagavad Gita. This ladies, they started wearing saris. Gents, they started wearing dhoti, kurta, tilak, kanthi mala, like that. They become very, very happy. In those days, around 50-60 years back, same Prabhupada, he went to America. At that time, there was a movement called as hippie movement. What was this in hippie movement? Hippie movement में क्या था? That I am very dissatisfied with the country, with the government. Why I am dissatisfied? See, material things cannot make you happy. So these people, they decided, will not listen any person who is above or equal to 30 or 35. 30 से 35 साल के बड़े आदमी की बात हम सुनेंगे नहीं. And they started living like animals. Streets में they will take drugs, marijuana, and so much they are intoxicated. They are not knowing they're from good families. They're from good families. But there was a street, Ashbury Street in San Francisco. Then this, what is the name? I'm forgetting. One more street in New York. These streets were just slipping from my mind. Anyway, these streets were very, very dangerous. In the daytime also, people were fearful of going at that place. So all these hippies will be totally either drunk or have taken heavy doses of drugs. बहुत ही भयंकर उन्होंने drugs लिए हुए हैं, and they'll sit like this whole day क्योंकि उनको इतना heavy लगता है दिमाग में. So they are not able to feel peace inside their mind. And ऐसा किलोमीटर तक उनकी लाइन लगी रहती थी. Can you imagine? और I was surprised. In fact, somebody told me, आज भी ये situation आपको न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को मिलेगी. These streets. In fact, today also, these hippies are there, unfortunately. So anyway, so these hippies will not listen anyone, and they are everywhere. They start spreading their culture, and there were people who are not only just following, in fact, spreading it inside America. So that time, Prabhupada, when he went there,
He just taught them about Bhagavad Gita, and they all became happy. Many of them very, very, very happy. They not only left the drugs, but they started teaching about Bhagavad Gita to anyone and everyone, and they became happy. Right? So here's a small video. You will see the glimpse. कैसे ये चीज किसी को convert कर सकती है, right? So just again share. I hope कि आप लोगों को साउंड आ रहा होगा. Just one more time before I go. What is called a quarantine. Quarantine. How you can violate the nature's law? It is not possible. Nature's law is so strict. A little deviation will put you into suffering. This is going on. That is Japa. And if you violate more and more and more, then you suffer more and more and more. This is it. You cannot escape it. That is the general law everywhere, all over the world, life for life. But similarly, in God's law, there is no such thing that if you kill a human being, he will be killed. And if you kill an animal, he will not be killed. That is imperfect law, man-made law. You are maintaining so many slaughterhouses, and when it will be mature, there will be war, the wholesale murder. One atom bomb, finished. You have to suffer. Don't think that innocent animals, they cannot protest. Let us kill and eat. No, you will be also punished. Wait for accumulation of your sinful activity. Why do you think there is no punishment, there is no God? This is utopia. Don't think that. Utopia. You can imagine that there is no God, there is no Japaraj, there is no punishment like me too. That is your fancy, but it is not the fact. I want to make a revolution against godless revolution. I hope you could understand through this video basically what was the spirit which was there inside Srila Prabhupada, and है ना, वो उस स्पिरिट के साथ वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं और भगवद गीता का सबको मैसेज देना शुरू करते हैं. So he had given this message to the English people, to the Westerners. Why don't we take this message also seriously? जब Westerners they can accept this message, हम क्यों इसको seriously ना लें? So we also should take a vow, okay, I will also
try to understand Bhagavad Gita and try to implement it in my life, right? So नीदरलैंड में हम लोग देखते हैं वहां पर भगवत गीता को पढ़ाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है, and we see such kind of है ना famous stars, they are also reading Bhagavad Gita. Will Smith like that is telling. So after Bhagavad Gita reading, a person who is very looking, ना you can make a practical experience also. कोई भी व्यक्ति जो बहुत डल लग रहा है, ड्रग एडिक्टेड है, और आप उसको भगवद गीता पढ़ा के देखिए, उसके चेहरे पे क्या रौनक आ जाएगी ना. दीज आर एक्चुअली प्रैक्टिकल थिंग्स. पहले क्या होता है, बाकी ड्रग्स लेने के बाद में क्या होता है, उनका एडिक्शन होने के बाद में और खराब हो जाता है, चाहे वो अल्कोहल हो या फिर और किसी तरह का ड्रग्स हो, लेकिन भगवद गीता के बाद में आदमी और खुश हो जाता है. So here is again a small video which is telling what actually the true leader, true teacher of Bhagavad Gita wants from all of us. So, my dear boys and girls, about 6 years ago, I came to your country single-handed with this pair of symbol. Now, you are so many chanting Hare Krishna. That is my success. Lord Chaitanya desired that in all the towns, in as many towns and villages as they are on the surface of the globe, my name will be broadcast. My plan was, if I can convince the younger generation of America, they will take up. I am an old man. I came here at the age of 70 years. Now I am 76. So, my warning is already there. In 1971, I had a severe heart attack. You know all. So, the mission of Chaitanya Mahaprabhu is now in your hand. If you kindly take this Krishna consciousness movement seriously, your country will be saved and the whole world will be saved. So these boys are helping me. They should come forward. Younger generation of India, they should join this movement and spread Krishna consciousness all over the world. That is India's business. Chaitanya Mahaprabhu said, Bharat bhumite manusya janma hailo ja, janma sarthak kari karo paropaka. So you could see that before, just like Albert Einstein is saying कि मुझे जो है भगवान के विचारों को समझना है, then you will understand everything. Similarly, if you really want to understand about yourself, try to understand first Bhagavad Gita. And Bhagavad Gita समझने के लिए हमें जो उनके true teacher हैं, just like Srila Prabhupada, उनको समझना होगा. That's why I had shown you these videos. So now I request you all, first thing, few announcements before ending the session. अगर आपके कुछ questions हैं तो you can drop in your chat box. We have got our centers, 2 centers here in Jodhpur. First center we have got in Ratanada, MBA Engineering College के पास सेनापति भवन है, वहाँ पे दुर्गा माता मंदिर, उसके सामने फोक का बोर्ड लगा हुआ FL के. You can come there and you can come and discuss Bhagavad Gita with us. रीड इंट्रोडक्शन ऑफ भगवत गीता. हम लोग जो है भगवत गीता हिंदी इंग्लिश दोनों का लिंक डाल देंगे ग्रुप में, तो यू शैल रीड भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप. मार्केट में बहुत सारे वर्जन्स है भगवत गीता के, सो प्लीज डोंट रीड एनीथिंग, अदरवाइज यू विल गेट डाइवर्टेड.
तो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है भगवत गीता का, थोड़ा बड़ा है आई नो, नो डाउट, तो 1 से 1.5 घंटा लगेगा, और हो सके तो चैप्टर 1 भी पढ़ लीजिए। कल हम लोग चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं भगवत गीता का, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग पहले जो रीडिंग कर रहे थे IQ केस को, अगर वो पढ़ के फिनिश कर सके और इन जो कर रहे तो बहुत ही वंडरफुल रहेगा। जो भी आपके डाउट रहे तो यू कैन जस्ट व्हाट्सअप मी, आई एम जस्ट टाइपिंग माई WhatsApp number to you all, so that if you have any questions you can just type, send me. Right? And every day tomorrow I'll tell you beautiful thing, just chanting about Hare Krishna Mahamantra in the morning. If you want, you can join this session tomorrow. 6:30 will start probably. That is a very beautiful session, chanting session. Okay, so these are the things for the today. In the last there will be quiz. We'll be having quiz. Yesterday I was supposed to drop the quiz today for the last 8 sessions. So today probably or tomorrow will be dropping, and जो top 10 winners रहेंगे उनको हम लोग prizes देंगे। इसी तरीके से भगवत गीता भी top 10 winners को हम लोग prizes देंगे। So you be very attentive. आप में से कुछ लोग summary लिख सकते हैं आज के सेशन की, कल के सेशन की, every day, and you can send me across. We'll publish it inside our groups. Okay, and you can invite your friends also. Anyway, जो आज नहीं आ पाए तो कल भी आ सकते हैं, because we'll be starting it from tomorrow. सारे सेशंस बहुत जरूरी हैं, so don't miss any session. Try to write the summary of each session. अगर हो सके तो आप मुझे भेजिए and we will drop into the group, WhatsApp group. Okay, so that's all for today. So read the books, and I have told about these things. So any questions you can type in your chat box if you have any questions. Okay, here are some queries. Sir can send any WhatsApp group link. WhatsApp group link, if you register, then you'll get that link already. Okay, you can send me WhatsApp message and we'll send you the link. Okay. Okay, sure. Thank you. So then we'll end here. I hope there are no questions. Sir, from where I can read Bhagavad Gita? Okay, no issues. So you just start from the first page only. You just open it. जहाँ पर आपको दिखता है, you just start it. उसमें forward है, preface है, then introduction है, that all you please just start reading. Okay. उधर ने लिखा है why there is no mention of Radha and Bhagavatam. You are asking very high question. Still, I'll give you a brief answer. So that basically Shukadeva Goswami, who is the speaker of Bhagavatam, whenever he'll hear the name of Srimati Radha Rani, he'll come in ecstasy. वो एकदम भाव में आ जाएंगे और फिर वो भागवतम आगे बोल नहीं पाएंगे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम बोल रहे हैं। That's why he took the name of Radha Rani as Anaradha or Aradhana or Anyaradhana. Like that, he is telling the name of Srimati Radha Rani. He is not taking the name Radha directly. Okay. Some of you are asking कि I cannot chant 16 rounds. So no problem, you can reduce, but try to fix some number of rounds. इतना round chanting मुझे करना है, Hare Krishna. Fine. So thank you for all. Today is little late, but tomorrow we'll finish on time, right? Because it was introduction session, so many things were there today. Okay. Thank you. See you tomorrow. And today, messages are there. Mantra to chant, please. So in tomorrow's session, I'll tell you. Okay. Sir, can you please tell me where I can find the authenticate source of Bhagavad Gita online? So I'll share in the WhatsApp group the link of Bhagavad Gita. It's a Bhagavad Gita as it is. So उसका link मैं group में जरूर भेज दूंगा. अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा. So you can please start reading that. Okay. Thank you so much. Hare Krishna, everyone. Hari Bol.